Evening to all of you. I cordially welcome all the participants for the 1 week online faculty development program conducted by Julelal Institute of Technology and Management from the MBA department. I kindly request all of you to please come online and we would be starting with the session in another minute. Priyanka ma'am, I request you to kindly begin the inauguration part as our Vice Principal Sir, Dr. Sohail Pura Sir, and Yes. the resource person, the speaker for today's session, Dr. Rahul Muhare, both of them have joined. Please start. Sure, ma'am. Sure. Thank you so much, ma'am. I once again welcome a warm welcome to everybody in the program, to all the distinguished speakers, faculty members, and participants. This is an 1 week online faculty development program conducted by MBA department on integrating artificial intelligence in management, education, and research, commencing from today. I extend a respectful welcome to our Honorable Vice Principal, Dr. Sohail Bura Sir, and Dr. Mubina Sefi, Head of Department, MBA, whose presence greatly encourages us and supports our academic initiatives. The integration of artificial intelligence in management education and research has become highly relevant in today's evolving academic environment, and this program aims to provide meaningful insight into the important domain. At this juncture, I humbly request our Honorable Vice Principal, Dr. Sohail Burasa, to kindly enlighten us with his valuable words of guidance and formally address the gathering. So please. Good evening, all. Good evening, sir. Am I audible, madam? Yes, sir. Okay. At the outset, let me congratulate the MBA department for taking this initiative for organizing this faculty development program. On behalf of Julila Institute of Technology, it gives me an immense pleasure to welcome you all for this 1 week online faculty development program on the emerging topic that is integrating the AI in management, education, and research, which is organized by MBA Department, Julila Institute of Technology, Nagpur. As said by Priyanka, AI is a buzzword now, and its integration into the management, education, and research is very essential nowadays. Definitely, program like this faculty development program will help the faculty members and the researchers to understand the emerging AI tools and to adapt to innovative tools into their teaching practices. Definitely, it will help all the researchers and the faculty members to not only take their research plus enlighten the students with these emerging tools. I congratulate the MBA department and especially the coordinator, Ms. Mubina, Dr. Mubina Shafi, for taking this timely efforts and initiative. On behalf of JIT, I would like to thank all the resource person who have given their concern and the today's speaker, Mohare sir. I welcome you for sharing their expertise. I am confident that this faculty development program will academically enrich and practically be useful for all the participants. With this word, I formally declare the faculty development program inaugurated and wish everyone a successful and enriching learning expertise. Thank you. Thank you so much, sir, for your encouraging words and guidance. Your encouragement and vision provide a great motivation to the organization team, sir, and to the participants as well, as they set a strong foundation for a successful conduct of this faculty development program. Once again, thank you so much, sir. Thank you. Dear, Dear participants, now I take this honor
to introduce our distinguished resource person for today's training program, Dr. Rahul Vijay Mohare. Dr. Mohare is an accomplished academician and a researcher with over 24 years of rich experience in teaching, research, and training. He is currently serving as an assistant professor at Sri Ramdev Baba College of Engineering and Management. His academic credentials are truly impressive. He holds PhD degree in both management and computer science, along with MBA in human resources, MPhil, and MSc in computer science. Dr. Mohare has an outstanding research profile with more than 50 publications in reputed international and national journals and conferences. And he is also the author of 9 books. He's an approved PhD supervisor at RTMU, currently guiding doctoral scholars and has mentored over 250 postgraduate students. Has served a resource person in more than 75 research methodology workshops, organized multiple FDPs and MDPs, and also conducted corporate trainings programs for reputed organizations. His areas of expertise include research methodology, data analytics, decision making tools, public policy, impact assessment, and consumer behavior, making him a highly sought after trainer and an academic leader. With this vast experience, practical insight, and an engaging teaching style, we are truly privileged to learn from him today. On behalf of the organizing committee and all participants, I once again extend a warm welcome to Dr. Mohare. We now request you, sir, to please kindly take over the session, and we are really looking forward for an insightful learning. Thank you. Thank you. Good evening, all. Good evening, Sohail sir. Long time we see you. Thank you, Priyanka. Thank you for such a nice introduction. But perhaps I don't deserve this kind of thing. I will definitely try myself to deserve something like this. But yes, I will try. You deserve. Now, since this session is about to begin, so the session which is means the topic which was given me to discuss upon is like survey automation and report generation. Means that too AI assisted. So it is something like that we all are sailing on the same boat. Means it is like I'm also learning. I'm not an expert into this particular field. This is first kind of disclaimer, because we are also learning. Everyone means everyone is learning. Everyone is going into the same phase that we are learning this AI. This is something new, and we being academician, we are trying to cope it with, because our students are also doing much better than what we are doing, because perhaps the destructive things they could learn in a very easiest manner, and we see it in a very constructive way. So this is a basic difference between them and us, that what they see and what we see. So means today what we are doing, it's like we are exploring how to automate the labor of research, and that too like without compromising the thought of research. This is the thing that we should means consider for ourselves. So what we have developed for today's session is that I shall I share my PPT. I'll share my screen. Yes, sir. So this is the PPT that I'm sharing. I hope the PPT is visible. So Yes, sir, it is visible. Okay, fine. Thank you. So the topic that has been chosen for the opening session is like survey analysis and reporting automation using AI. So I have designed a simple presentation. Since it is of 1 hour, I'll try to cover the thought process as well, and if possible, if time permits, we'll go with the hands-on also, because plenty of AI tools are there. We can use all those AI tools, but what we need to remember is that this AI will only provide the map, but we being the researcher, we need to provide the compass. So that is the thing, or that is the gap we need to bridge upon.
because our role would be like we need to verify the assumptions and we need to interpret it in terms of human story behind the numbers. Means we should go beyond the numbers and we should interpret that as a human story. This is something that is the responsibility of a researcher, or as an investigator it becomes a part of our responsibility that we should mention it in that way. So there are 6 different things that I have mentioned, or I want to discuss upon. So first is that when we started a survey, means since we all are academician, we are very well aware about the survey. So what we start with and where we end it, कहाँ शुरू करते हैं और कहाँ खत्म करते हैं, तो हम लोग सिंपल एक डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं. We have our survey instrument, we float it and we collect the data. Once we collect the data, the very first phase should be like we should understand the data and we should clean the data. When I say that we should clean the data, it means that we should check for the noise, we should eliminate the noise, we should identify the outliers, we should manage the outliers, we should manage the missing value. Everything means if we are considering this, it means that we are understanding the data and we are trying to clean it up. Why we want to try to clean it up? Because we need the normality and homogeneity. Just because if we want to apply some parametric test like ANOVA, then we need to assume that the data is normal and it is a homogeneous type of data. Because if these assumptions are violated, perhaps the AI tool that we are using will default like no parametric test alternatives, and perhaps it may not generate the right result. So why we need to clean up the data first, and once we have done with this, then we should have 2 different types of analysis. First may go with the descriptive analytics and second may go with the inferential analysis. So when we talk about the descriptive analytics, it means that we are talking about the ratio, count, percent, proportion, because we are having only 2 types of variable into descriptive analytics. Like first is nominal variable, which may be interpreted as like yes, no, true, false, male, female kind of thing, wherein the statistical analysis cannot be applied or any of the statistical tool cannot be applied. So that we are calling as a descriptive analytics. Along with that, the visualization, that how we are going to visualize the data with respect to the descriptive analytics. And the third part would be the inferential analysis. So inferential analysis means that if we begin with an assumption wherein the role of the variable would be of interval or ratio type. अगर हम लोग इन्फरेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं तो जो हम लोगों के पास वेरिएबल रहेगा वो इंटरवल टाइप का या रेशियो टाइप का वेरिएबल होगा. इन्फरेंस मींस वी नीड टू कंसीडर सर्टेन assumption. With respect to that assumption, with the data that we are having with us, we need to validate those assumptions and we need to decide a decision criteria. The decision criteria is based on the statistical test that we are using, and based on that decision criteria we need to declare that whether we are rejecting the assumption or we fail to reject the assumption. In normal terms or in research methodology terms, we are calling it as a hypothesis. The fourth in this row would be the visualization. Means if we want to go with the visual analytics, we want to present the human story in some type of visualization. Then how we are going to visualize the things, we need to understand that also. Next, the foremost, which is very important, is the interpretation and the insights. The data that we are having, we apply lot many models over the data, be it means classification, clustering, or inferential analysis, predictive modeling, or prescriptive modeling, or diagnostic analysis, or descriptive analysis, whatever be the thing is. Then certain value is with us, means we would be dealing with that value, and then question comes that how we are going to interpret this value. इस value को interpret कैसे करना है, इसका meaningful insight हम लोग कैसे present करें, so that someone would find interest into this. किसी को ये एक particular topic पे एक interest आए कि यार इसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर सच में ये हमारे पास कुछ काम में आ सकता है क्या. And the sixth one, now since every journal have their own publication ethics and format, then how we should generate the best research paper or best report so that it should get accepted to the journals which are like having their own publication standard. It may like Scopus or UGC Care Index or APA style reporting or any XYZ university's PhD standard. Means if we want to go with any best journal, then they have their own publication standards and format. Then how we could prompt the things in
for AI, so that it would be very easy for us. So we are going to look for this. So when we are writing or we are taking help from AI, we need to understand that how we are going to take the help of AI. So what this presentation or what this today's session is going to do. So today's session is like, just a second. Just a second. So this is the research imperative, that why we are going to do this, because we want to bridge the gap. So this is like in a contemporary means way of doing the research and the adoption of AI, how means we could bridge this gap so that it becomes easy for us and it becomes really helpful for us, so that we could engage ourselves as well as our students, so that they could get inclined towards research. So this is one thing, that why we should go with the AI mode or AI assisted mode. Then the analytical challenge is also there, that we are having the raw survey, perhaps that may have some kind of inconsistencies. There are some kind of data challenges which can panic the investigator, that how we are going to manage this data values and how we are going to check the validity and reliability and how we could put the things into the findings. Then what is the purpose of this framework? The one which we are discussing just now is to inform all the participants that we could use this AI on to writing a very good prompt, so that we could get the results in the way that we want, and the desired result would be presented into very good journal, so that the acceptance ratio would be high, right? So this is the research imperative. So let us understand first that what we mean to say by data understanding and cleaning. So our aim and goal, our aim is like our intent and our goal is like action. So our aim is to ensure the integrity, accuracy and analytical readiness of the survey data set. And it is based on some systematically examining its structure, variable characteristics and data quality prior to the statistical analysis. So this is like, we need to check for the accuracy, we need to check for the analytical readiness of the data, and once that is ready, then we need to consider that it should be clean, it should be consistent, and it should be documented data set, so that by identifying the variable type itself, we could consider that all these are the missing values, and we could check that how we could write the things, right? Now I'll just share one more thing with you. So Sir, I'm sorry, I'm interrupting. yes, ma'am. But the PPT is visible. But the only thing is, while we are seeing the PPT, we can also see a small screen, which is, picture-in-picture screen. Okay. So how we can remove that? Even I don't know. Minimize Can that. you stop You can share presenting the again? entire PPT and then minimize that part. Okay, instead of sharing the complete screen, I need to share only PPT. Something like this? Yeah. Okay. Okay, perhaps now the Word file that you can see. Yeah, it will be visible. Okay, fine. So मैं कुछ बोलूं और कहूं, इससे बेहतर है कि हम लोग उसको कुछ करें. Means let us do something so that we could also understand that how it could be helping us, right? What I have done, I have just for the practical purpose, I have simply identified one research paper title. Means this is a simple dummy type of title that I have identified, but actual reference paper is also present there. The link is already being shared over here. So the paper title that I have given is like examining the role of AI assisted learning in enhancing student engagement in academic performance. Now, this is my paper title. Then the reference paper, the actual paper is present over here. Means this is the link that you can easily identify. Next is I have developed a little questionnaire
एक छोटा सा क्वेश्चनियर भी डेवलप कर लिया है, और क्वेश्चनियर में क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए. फर्स्ट वेरिएबल इज जेंडर, नेक्स्ट इज एज एंड प्रोग्राम, नेक्स्ट इज AI usage frequency, next is daily study hours, then is student engagement, then academic performance, and then overall satisfaction. For student engagement, 4 parameters were identified. For academic performance, 3 parameters were identified. And for every such parameters, since I want to make it more real, more authenticated, so I have given all the link of the research paper from where I have taken all these parameters and all these variables. So this is the data, or this is the paper that we want to address, and looking to the title, we want to generate a report, or we want to generate a research paper, we want to do some analysis. So I have developed one questionnaire, and I have shared the link and the resources from where this questionnaires variable have been taken. We all guys used to have this kind of exercise that we used to study, we used to do the literature, we identify some variable, we take those variable, we build our own questionnaire, we float it, and we collect the data. So I assume that this process has already been done, and you also know all this process. I have collected the data, and now I'm ready with my Excel worksheet. So if I'll be sharing that Excel worksheet also. So this is my data. Now, what is the first thing that we should do? We being as a researcher, now what is the first thing that we are going to do? We are going to have the very first thing that we need to consider, or we need to clear data understanding in data cleaning. Means this is the first thing that we are going to do, that we are understanding the data and we are going to clean the data. Now what we can do, we can use any of the AI platform. अब यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा. एज अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सारे के सारे AI टूल आपको टेबल्स, इमेजेस या रिपोर्ट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में कितने देते हैं या कौन सा देता है, दैट इज द स्टडी दैट वी शुड डू एट अवर ओन एंड. ये हम लोगों ने करना है कि हम लोगों को कौन सा दे रहा है. सेकेंड, दो Perplexity, Gemini, and ChatGPT. Now they are running 1 year free or 18 months free, but the functionality that they are supporting, that also we need to understand. ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यार ये क्या फंक्शनैलिटी हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं. Are they performing something best, or are they just telling them, और ये क्या बेहतर और अच्छा कर सकते हैं. Next is the authenticity of the references and the data value. Many of people have already complained that when they are using the ChatGPT AI tool, perhaps they are getting the wrong references. शायद उन लोगों को कोई गलत references मिल रही है या गलत data values मिल रही है. तो ये investigator का भी काम रहेगा कि उसको cross verify कर ले कि यार सच में ChatGPT सही से वैल्यूज या फिगर्स या फिर विजुअलाइजेशंस जनरेट कर रहा है क्या. ये पहले मॉडल में हुआ करता था. अभी जो ChatGPT 5.2 आया हुआ है, इसमें शायद ये बहुत सारी चीजें मिनिमाइज करके रखी हुई है. ChatGPT was launched with 175 billion parameters. Now the one which we are using, ChatGPT 5.2, it is almost about 1.7 trillion parameters. तो अभी तो इम्प्रूवमेंट भी बहुत हो गया, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी आ गया है, और आपको बहुत सारी चीजें फ्रीली एज अ पार्ट ऑफ फ्रीबीज मिल जाती है जिसको आप लोग यूज कर सकते होगे. बट नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू कुड डू दैट. मतलब हम लोग जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि यार कैसा प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका प्रॉम्प्ट हम लोग कैसे लिखी कि जिसकी वजह से हम लोगों को ये डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है. ठीक है. दूसरा, जब हम लोग कोई सा भी फ्री AI टूल यूज कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेशंस और होता है कि हर AI टूल बहुत सारी मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है. मींस एनालिटिकल इंजन अलग रहेगा, फिर उसके बाद इमेज जनरेशन वाला इंजन अलग रहेगा, फिर उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट जनरेशन वाला इंजन अलग रहेगा. जैसे बहुत सारे लिमिटेशंस उस पर्टिकुलर AI टूल के साथ हो सकते हैं. तीसरा, शायद जो मेजर लिमिटेशन वो ये हो सकता है कि कितने वर्ड्स का आउटपुट जनरेट करना है. मतलब 2000 वर्ड्स का ही आउटपुट जनरेट होगा या फिर 2500 वर्ड्स का ही आउटपुट जनरेट होगा. तो हम लोग जितना डिटेल्ड में चाहते हैं वो शायद उतना डिटेल में आएगा या नहीं आएगा. दैट वी means have to leave it with the AI tool that we are using. मतलब जो भी AI tool आप यूज कर रहे हो, आप उसके साथ उसको छोड़ सकते हो. तो जब अब बात आती है कि जब मैं AI टूल यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू डू. आई एम सपोज टू राइट अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट. मतलब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि मैं AI टूल को इंस्ट्रक्ट करूँ.
ठीक है, अगर मुझे AI टूल को इंस्ट्रक्ट करना है, इफ आई वांट टू इंस्ट्रक्ट AI टूल, देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फॉलो अ RTRI मॉडल, राइट? सो RTRI मॉडल क्या होता है? सो पार्टिसिपेंट्स नीड टू डिफाइन द रोल, उसको रोल डिफाइन करना पड़ता है, दैट इफ यू आर यूजिंग दिस AI टूल, व्हाट इज योर रोल? योर रोल मीन्स whether you are an academician, whether you are a researcher, whether you are a data scientist, whether you are a statistician, which role they want to play upon. मतलब आप क्या चाहते हो कि यार ये AI टूल कौन सा रोल प्ले करना चाहिए, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. मतलब उसको बताना पड़ेगा कि यार योर रोल फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा इज दिस ओनली, एंड वंस यू गिव दैट पर्टिकुलर रोल एंड इंस्ट्रक्शन टू AI टूल, AI would generate an output in the same fashion, in same mindful fashion, that what role a particular person is going to play. If I'm saying that you should be considered as a statistician, you yourself is a statistician, and then you think that this is the data, how you're going to manage this particular data. So you need to ask them to act as a particular person may be like statistician or mathematician or an academician or a subject expert or domain expert, whatever you wish to, right? So this is RTRI model. Usually it is called as RTRI model. So R stands for role, then T stand for task, that what task you want to perform. The very first step should be like what role you want to play. सेकेंड इज व्हाट टास्क यू वांट टू परफॉर्म, आपको कौन सा टास्क करना है, ठीक है? अगर मुझे डेटा एनालिसिस करना है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार डेटा एनालिसिस करना है या डेटा क्लीनिंग करना है या इन्फरेंशियल एनालिसिस करना है या रिपोर्ट जनरेट करनी है, या फिर मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, ये जब तक कि मैं बताऊंगा नहीं तब तक कि शायद मुझे वो काम करके नहीं मिलेगा. सो टास्क जब आप डिफाइन करोगे, इट शुड बी वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड एंड वेरी इजीली वर्डेड. मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. जितनी एम्बिग्यूटी आप ज्यादा रखने का स्कोप रखोगे, शायद उतने ही रिजल्ट्स आप लोगों के वेग आएंगे. सो इट बिकम्स अ जॉब ऑफ रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर और a prompt generator to write very precise and clear prompt that what task is need to be performed, कौन सा task हम लोगों को perform करना है और कैसे हम लोग उसको perform कर सकेंगे. This was the second, that is T. Next is again R, RTRI. So first was role, T for task. Again R, this R would be the requirement. Requirement goes with the constraints. Requirement अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो what all are the constraints? Constraints क्या है ये आप लोगों को बताने होंगे. Means if you are limiting yourself with the hypothesis validation only, that too with respect to two variables, that too no moderator variable would be there. So if the things are very clear at your end, so you need to write all those things there. आप लोगों को वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी. AI खुद समझदार है, बहुत समझदार है, लेकिन वो उतना डम भी हो सकता है अगर हम लोग उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे. So the third part would be the constraint that you need to impose upon. आप लोगों को वो constraint भी impose करने पड़ेंगे कि यार ये constraint कैसे होंगे. And the fourth one, the I, is the instructions. What instructions you need to issue? So you need to start with role, you need to define the task, you need to list out the constraints as a part of requirement, and then you need to give the clear instruction. Then it is just like the W's framework. It's like who, the role, what, the action, and when, the desired time frame or a context. So then is that you need to be very precise while using the action verb. आप लोगों को थोड़ा precise और ज्यादा रहना पड़ेगा. कहाँ पे रहना पड़ेगा कि जहाँ आप लोग action verb use करना चाहते हो, like what you wish to do, like you want to generate, you want to summarize, you want to illustrate, you want to develop, you want to demonstrate, you want to describe, what exactly you want to do. So that all are the action verbs. So if you feel that this particular thing should happen, then it is very specific. ये बहुत ज़्यादा specific है. आप जितना बेहतर तरीके से उसको लिख सकते हैं, आप उतना लिखिए, आपको वो चीज़ definitely करके मिल जाएगी. Next is please don't overload the AI tool with the excess prompt. मतलब मैं अभी जो बता रहा हूँ, जो मैं दिखाऊंगा शायद, that is the excess prompt. मतलब बहुत सारा या बहुत ज़्यादा मैंने लिखा हुआ. आप इसमें से जो आपको ठीक लगता है आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है? Now listen here, this is the tool that I am using, or this is something that that is being issued
So this is master prompt, the very first stage that we were discussing, data understanding and cleaning. तो यार इसमें क्या क्या करना है, तो मैंने क्या बताया था कि हम लोगों के पास एक RTRI मॉडल होना चाहिए, रोल, देन टास्क, देन रिक्वायरमेंट एंड देन इंस्ट्रक्शन. सो रोल, जब मैं डेटा क्लीनिंग या अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम इंस्ट्रक्टिंग द AI मॉडल, आई एम इंस्ट्रक्टिंग दैट योर रोल इज लाइक एक्ट एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, statistician and academic researcher. Okay, this is my role. I have defined the role and given it to the AI model or AI agent कि भैया आपका रोल क्या है. तो भैया आपका रोल है, you are a senior data analyst, you are statistician, you are academic researcher, right? Then the task definition. अब perform क्या करना है यार, means what you exactly want to do or what exactly you would be doing. So you would do something like this. So I will upload an Excel file. What I would be saying that I am going to upload an Excel file. मैं एक simple सा Excel file upload करूँगा, which contains the survey respondent. मतलब ये क्या करेगा, तो ये survey responses contain करेगा, और survey responses में क्या रहेगा, collected on a 5-point Likert scale. Now you should be very clear on to this. आपको ये बहुत ज़्यादा clarity उसको बतानी पड़ेगी कि यार ये exactly क्या होने वाला है. तो मैं तो पहले बता दे रहा हूँ ना. I'm telling them that I would be uploading the Excel file, right? This is one thing. Then what it would be containing, it would be containing survey responses. This is one thing. Collected, ये कैसे collect किया है, how the data is being collected. So data is being collected like 5-point Likert scale. When I say 5-point Likert scale, it means that I'm dealing with the interval scale type of data. Then what you need to ask them, मतलब अब मुझे AI agent को क्या बताना है, I'm telling that perform comprehensive data cleaning exercise to ensure the data quality and research validity. भैया अब क्या करना है, तो आप लोगों को comprehensive data cleaning करना है so that the data quality should be enhanced and research validity would be maintained. मतलब ये चीज आप लोगों को करनी है. This is the task that your AI agent is going to do, right? So first is role, second is definition. Now how AI would understand the Excel worksheet. AI Excel worksheet को कैसे understand करेगा? So data inspection. Now when AI tool is going to read the file, then how he should read the Excel file. So now the data inspection, you are instructing the AI agent that load the Excel file and inspect all sheets and column. When I say sheets and column, perhaps in a common workbook you may have 2, 3, 4, 5, 10 sheets. Now you are asking them that inspect all the sheets and along with all the columns. जितने भी columns होंगे वो सारे columns में आपका जो भी data होगा आप उसको check कर लीजिए. ठीक है. Next, identify the variable type. आप उसको बता रहे हो कि यार variable types को identify करो. ठीक है. Now since we have discussed that we are having nominal, ordinal, scale and ratio type of variables, तो you tell them, क्योंकि आप तो research हो, आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको पहले से ही पता है कि what all the nominal variables are. So gender and program is a nominal variable. Ordinal is like age group, AI usage frequency is an ordinal variable. Scale, so engagement, performance, satisfaction items. Then ratio, daily study hours. Then finally what you need that report total rows and columns. ठीक है. अब अगर मैं ये हटा देता हूं तो मुझे सैंपल साइज कितना होगा ये शायद पता नहीं चलेगा. ठीक है. So if you want to get the sample size, you need to put the things in this way, right? Then missing value treatment. अब next भैया क्या क्या करना है. फर्स्ट तो आप डेटा इंस्पेक्ट कर लीजिए. डेटा इंस्पेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप के डेटा को बिलोंग करता है. देन मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट. अब मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट कैसी देनी है, मींस व्हाट ऑल आर द मिसिंग वैल्यू थिंग्स दैट वी नीड to understand when we are talking about the data cleaning. So we need to identify the missing value for each variable. हर variable के लिए एक missing value अगर होती है तो आप उसे identify कीजिए. Next is apply appropriate strategies. अब appropriate strategies, अब इसमें कैसे है that a investigator should be wise enough. Investigator जो भी है, he should be wise enough, he should be learned to know that what all are the type of treatment that we can offer to the missing values. Like if the Likert scale item are there, then the treatment is median imputation. If daily study hours, the ratio variable is there, then you can go with the mean or median imputation. If a categorical variable is there, then you can go with the mode imputation. मतलब Likert scale item में आप median value से replace करेंगे. Daily study hours अगर ratio type का variable है तो आप उसको mean से replace करोगे. Categorical variable है तो आप उसको mode से replace करोगे.
सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंस्ट्रक्ट. आप लोगों को इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन देनी है. जब तक कि आप खुद ये क्लियर नहीं होगे कि इसको कितना बेहतर तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तब तक कि हम लोग नहीं कंसीडर कर पाएंगे कि इसका आउटपुट कैसे आएगा या फिर हम लोग इसके साथ कैसे डील करेंगे. Next is outlier detection. Outlier detection means perhaps the Likert scale is 5-point Likert scale. The values that we are seeking is like from 1 to 5, and at one place perhaps you might see 7, 8, 9. So perhaps this is the outlier. तो ये डिटेक्ट भी करना है, लेकिन आउटलियर डिटेक्ट करने की टेक्निक क्या होती है, तो आपको ये बताना है कि आउटलियर डिटेक्ट करने की टेक्निक अगर होगी तो वन इज बॉक्स प्लॉट एंड सेकेंड इज जेड स्कोर. So plus minus 3 threshold means plus minus 3 is the standard deviation. तो मीन वैल्यू से प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास आते हैं. इसके बाहर जो भी होगा यू कैन ट्रीट इट एज एन आउटलियर. बॉक्स प्लॉट करते हो या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड यूज करते हो तब भी आपको आउटलियर पता चल जाते हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द आउटलियर्स, आप आउटलियर्स को कैसे ट्रीट करते हो, तो दिस आर द टू मेथड्स, विंसोराइजेशन और रिप्लेसिंग इट विद द मीडियन. आप उसको मीडियन से रिप्लेस कर सकते हो. और दूसरा जो मेजर चीज होगी कि एआई अपने हिसाब से कुछ ना करे, इसलिए आप उसको बता दोगे डू नॉट डिलीट रेज एंड रोज अंटिल अनलेस स्टैटिस्टिकली जस्टिफाइड. आप अपने हिसाब से रोज को डिलीट नहीं करोगे जब तक कि वो स्टैटिस्टिकली जस्टिफाई नहीं करेगा. अदरवाइज होगा क्या कि अगर डेटा क्लीनिंग करने आप बैठोगे, आप जैसा प्रॉम्प्ट लिखोगे, अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं भी लिखते हो तो what the default things would be there into play. default चीजें मतलब रोल में आ जाएगी, और डिफॉल्ट चीजें अगर रोल में आ जाएगी तो जो मिसिंग वैल्यूज है अगर उसका इंप्यूटेशन नहीं किया है, आपने नहीं बताया, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को वो रिमूव करना शुरू कर देगा. और रिमूव कर देने के बाद शायद आपका सैंपल साइज रिड्यूस हो जाएगा. इट विल रिड्यूस द सैंपल साइज. सो इफ यू वांट टू स्टॉप द AI tool reducing the sample size, you need to instruct them that do not delete rows until statistically justified. Then inconsistent and invalid responses. अब आप लोगों के पास शायद कोई inconsistent या invalid responses होंगे जो डेटा क्लीनिंग में आपके पास आपको निकाल देने होंगे, तो आप उसको बता सकते हो कि identify invalid entries. Still we haven't written anything for deletion. हम लोग सिंपल इतना बोल रहे हैं कि आप बस आइडेंटिफाई कीजिए इनवैलिड एंट्रीज कौन सी, कि यार लिकर्ट स्केल में 1 to 5 के बाद कोई वैल्यू हो सकती है. अनएक्सपेक्टेड कैटेगरीज, अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो शायद आपके पास अनएक्सपेक्टेड कैटेगरीज हो सकता है. एज ग्रुप आउटसाइड ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन, किसी का एज ग्रुप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 to 35 के बीच में होगा, उसके बाहर का कोई होगा, तो आप उसको कर लीजिए. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू करेक्ट, फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट इज टू करेक्ट. मैपिंग टू क्लोजेस्ट वैलिड कैटेगरी, मतलब अब भैया उसको करेक्ट करना है. करेक्ट कैसे करेंगे, जो नियरेस्ट या क्लोजिंग कैटेगरी होगी आप उसके साथ मैप कर लीजिए, या फिर इसको इंप्यूटिंग मेथड के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप उसका केस या स्पेलिंग भी बदल सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो आप उसमें दे सकते हो. सो इट गोज विद स्केल वैलिडेशन, पोस्ट क्लीनिंग वैलिडेशन, एंड फाइनली मींस अगर इसमें से कुछ आपको नहीं करना है, यू कैन स्किप दैट. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आउटपुट एंड डाउनलोड. सो व्हाट यू नीड टू से, सेव द क्लीन डेटा सेट एज, आप उसको नाम बता दीजिए. अगर आप जो AI टूल यूज कर रहे हो, इफ इट इज अलाउइंग यू टू डाउनलोड द मॉडिफाइड वन, तो वो मॉडिफाइड किस नाम से आएगा, तो वो मॉडिफाइड आएगा clean survey underscore data.xlx. Make the file downloadable so that the AI tool will understand that the file will get download, right? So this is how the first step would go, right? So till this point of time, if any question is there, please do ask. Sir, all these prompts which you suggested, this can be used in the free version of ChatGPT? Yes. It can be used in free version of ChatGPT only. Free version means the one which is available with everyone. One which is available for all, yes. Yeah. Means you can use means anything like this. Right. The only thing is that if I load ChatGPT or AI tool with each and everything, perhaps the analytical engine of ChatGPT won't support, just because too many tasks is to be performed at one go. So if you wish that in short way we need to go,
you need to write the one which is applicable to you. जो आपको जरूरी बन सकता है आप उतना ही लिखिए, बाकी लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज कैसे होता है कि एआई को अगर हम लोग ओवरलोड कर देंगे तो वो शायद काम नहीं करता या फिर रिपोर्ट नहीं करता। आपको सिंपल एक मैसेज आ जाएगा, द सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, वो शायद काम नहीं करेगा। Alright. Now, I'll just let's have some hands on for this। एक छोटा सा हम लोग करके भी देख लेते हैं, right? Just a second. I'll stop sharing the Word file, and now I'll show you the Excel file itself. So this is the data I'm sharing now. So this is the data that I am having. अब ये डेटा कैसा है? So this is the data of gender, then this is the age group, this is the program is like UG or PG, gender is like male female, AI usage frequency, so we are having three parameters like frequently, sometime, rarely. So these are the three variables that we are having. Next is daily study hours. So daily study hours is on ratio scale, so by any value that a user wish to go for. Then there are four parameters of engagement. That first is I actively participate in my learning activities when using AI based tool. Next is using AI tool increase my interest and attention during study session. Then AI assisted learning help me stay focused. I feel motivated to engage more deeply with my studies. So these are the four engagement parameter, and now we need to relate it with the performance parameter, that using AI tools has improved my understanding of course concept. AI assisted learning helps me complete academic tasks more effectively, and my academic performance has improved due to the use of AI based learning tools. So this is okay, so this got repeated, I'll just delete this. So this is the tools that we have, parameters that we have defined, and that has been taken from the literature review itself. मतलब ऐसा कोई hypothetical कुछ लिया नहीं है। आपके साथ वो वर्ड फाइल भी शेयर करूंगा अभी, आप उसमें भी चेक कर लीजिए, उसके रेफरेंसेस पे जाइए तो आपको वो सारी चीजें दिख जाएगी। And this is the overall satisfaction. So this is the Excel file, the data that I am having. Now the data which we are having is of almost 170 rows, means 170 odd instances we are having with us. अभी होता क्या है, बहुत बार जो AI टूल होता है ना, फ्री वर्जन होने की वजह से शायद ऐसे होता है कि इट माइट प्रोसेस ओनली 50 रोज, 50 फर्स्ट रोज और 60 फर्स्ट रोज, 70 फर्स्ट रोज, तो ऐसा भी कुछ होता है। सो वी विल मीन्स सी बोथ द थिंग्स टुगेदर, हम लोग दोनों चीजें करके देखते हैं। I'll now stop sharing this particular Excel file and let us go with the okay, just a second. Chat GPT. Wait a second. Can you see the screen now? So we aren't able to see as of now. Okay, just so now. Now, yes, sir, we can see now. Okay, fine. So this is Chat GPT, right? I'll open one more AI tool, Julius. This is a very nice tool which is to be used for data analysis. Data analysis अगर आपको करना है तो ये एक बहुत शानदार अच्छा AI tool है जो सपोर्ट करता है। नॉर्मल वे में तो फ्री में मिल जाएगा आपको, मतलब लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ आपको उसको फ्री कर सकते हैं आप। I'll log in with my Google account. I just wanted to show you the difference. That is why I'm showing both the things together, right? So this is Chat GPT. I'm uploading the Excel file first. So download. This is the Excel file.
right? And I'm just telling, instructing them, perform as per the prompt mentioned below. Okay, and what I'm doing, I'm just copying those prompt. ज़्यादा नहीं करते हम लोग, सिंपल 2-3 ही चीज़ें कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. So perform the as per the prompt mentioned below. So role is that act what we are asking them to act. Task definition. So this is the task definition that we have done. So data inspection में आपको ये सारी चीजें करनी है. फिर इसके बाद आपको मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट देना है. तो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट कैसी देनी है ये भी बता दिया हमने. फिर जस्ट इन केस इफ इट अपीयर्स, फॉर श्योर इट इज गोइंग टू गिव अस. अगर आउटलेयर डिटेक्शन होगा तो आउटलेयर डिटेक्शन भी दे देगा वो. और एक चीज और हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, और वो क्या है, तो वो हम लोग आउटपुट कैसे चाहते हैं वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं. सो लेट अस सी वेयर द आउटपुट इज. सो आउटपुट एंड डाउनलोड, सो दैट वी कुड क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क अपॉन, राइट? सो दिस इज आउटपुट. So I'm just pasting it here. So, sorry. Okay, ठीक है. Now I'll copy all this thing and we'll paste it into the Julius also. So this is done. It will do, and let us come to Julius and let us upload the file itself. So this is the file. And again, this is the prompt that we wish to add upon. So now I'm just pressing enter. Okay, so now look what ChatGPT is giving and what Julius is going to give to us. So ChatGPT have done the things for us. So they have inspected the complete file. उन्होंने डेटा इंस्पेक्शन कर दिया है. मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं. सो हर वो चीज उन्होंने कर दी है. क्लीन डेटा सेट, क्योंकि चैट जीपीटी है वो आपको डाउनलोड करने के लिए दे देता है. तो आपको क्लीन सर्वे डेटा नाम से आपका फाइल बन गया है. आप इम्प्यूटेशन लॉग अगर हो गया होगा, इम्प्यूटेशन करने की जरूरत पड़ गई होगी, तो फॉर श्योर उन्होंने दे भी दिया होगा और आपको वो समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ उसने किया हुआ है. ठीक है, तो इम्प्यूटेशन लॉग भी देख लेते हैं हम लोग कि इम्प्यूटेशन लॉग कैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. इफ देयर वाज समथिंग इनटू द डेटा टू बी डन फॉर इम्प्यूटेशन, फॉर श्योर चैट जीपीटी माइट हैव डन इट, राइट? तो हम लोग इसका भी प्रॉम्प्ट देने के बाद देख लेते हैं आउटपुट क्या आया हुआ है, सो दैट वी कैन रिलेट द थिंग्स टुगेदर. मींस इफ द डेटा इज ऑलरेडी क्लीन, अगर डेटा क्लीन होगा तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये इम्प्यूटेशन लॉग भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है. यहाँ पे आप लोगों को शीट 1 में पता चल गया है कि अननेम 0, हम लोगों की मिसिंग वैल्यू क्या है 170. अननेम 0 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉलम. हम लोग पहले कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट कॉलम वेयर इन देयर इज नो वैल्यू. इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से उसने बता दिया कि मिसिंग वैल्यू 170 है. जेंडर उसने बता दिया कि एक मिसिंग वैल्यू थी, उसको उसने मेल के साथ पॉपुलेट कर दिया है. एज ग्रुप में भी एक मिसिंग वैल्यू थी, उसमें उसने पॉपुलेट कर दिया 18 to 21. दिस इज द मोड वैल्यू. अगेन दिस इज द मोड वैल्यू. प्रोग्राम कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो फिर से मोड वैल्यू से उसने उसको रिप्लेस कर दिया. एआई यूसेज फ्रीक्वेंसी में भी फ्रीक्वेंटली उस एक मिसिंग वैल्यू थी, तो उसने उसको फ्रीक्वेंटली से रिप्लेस कर दिया है. डेली स्टडी आवर्स में भी एक मिसिंग वैल्यू थी, उसने उसको भी रिप्लेस कर दिया मीन या मीडियन से. या फिर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में भी एक मिसिंग वैल्यू थी, उसने उसको भी रिप्लेस कर दिया है 4 से, राइट? So this is what ChatGPT have done with us, or it has given us the value.
ठीक है. Now let us see that what the Julius is doing for us. मतलब जूलियस ने हमारे लिए क्या किया है. ठीक है, आपको क्लीन डेटा यहाँ पे मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड द क्लीन डेटा एज वेल. आप यहाँ पे क्लीन डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो पूछ लेता है इसके बाद हम लोगों को क्या करना है. तो यू कैन आस्क देम दैट व्हाट यू विश टू गो फॉर, राइट. The another one is the Julius, which is very nice for the data analysis. If you just look at into, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको सारी चीजें यहाँ पे ऐसी मिल जाएगी कि the data itself, just a second. So now it is thinking. Just wait for some time. The result may appear. तो जैसे डेटा क्लीनिंग कर रहा है या जूलियस कर रहा है तो आपको वो भी एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है. सो दिस इज अबाउट द डेटा क्लीनिंग. द इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी फॉर द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. मतलब ये आप बहुत अच्छे से और कर सकते हैं कि अगर डेटा एनालिसिस आपको कराना है तो व्हाट रोल यू विश दैट एआई टूल शुड प्ले. So AI tool should act as a senior data analyst, statistician and academic researcher specializing in survey research and in educational data analytics. ये आपको बताना पड़ेगा उनको कि यार what role you have to play and how you are going to execute the things. Task क्या है वो बताइए. Then data understanding, आपको उसको बताना पड़ेगा कि how you are going to understand the data, कि कौन सा वेरिएबल है, डेमोग्राफिक कौन से है, यूसेज एंड बिहेवियर के लिए क्या होना है, एंगेजमेंट आइटम्स कौन से है, परफॉर्मेंस आइटम्स कौन से हैं, ये आपको बताना पड़ेगा. मींस दिस इज जस्ट दैट एआई टूल शुड अंडरस्टैंड. आपका एआई टूल इसे समझ ले पहले. फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आपको क्या करना है, दैट टू विद रिस्पेक्ट टू द डेमोग्राफिक वेरिएबल. डेमोग्राफिक वेरिएबल के साथ क्या करना है. तो इफ यू विश दैट फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज शुड बी सॉर्ट फॉर, देन यू कैन गो फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज. For what variables you should go for? The variables should be like age group, gender, program, AI usage frequency. Then how you want the result. So I am asking them that present the result in publication ready tables interpretation. मैं ये चाहता हूँ कि यार ये result कैसे होने चाहिए. तो अगर मैं किसी रिसर्च पेपर में ये पब्लिकेशन में इस टेबल को इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो मुझे वो सीधा सीधा पब्लिकेशन रेडी टेबल मिल जाए जिसका इंटरप्रिटेशन के साथ मैं उसमें इंपोर्ट कर सकूँ. फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अगर मुझे कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ करना है तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ मुझे किस तरह का डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करना है. मे बी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, मिनिमम, मैक्सिमम, कौन से स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होंगे जो हम लोगों को कंसीडर करने हैं उनको बताने पड़ेंगे. वेरिएबल्स हम लोगों ने कौन से लेने हैं, लाइक डेली स्टडी आवर्स, एंगेजमेंट 1 टू एंगेजमेंट 4, परफॉर्मेंस 1 टू परफॉर्मेंस 3, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, कौन से वेरिएबल लेने हैं ये आपको बताने पड़ेंगे. Let us see whether the Julius has produced the result or not. So this is still thinking. Let them give some time. Means if someone have already used it, perhaps they are very well aware that how this particular Julius is going to work. This is one of the best thing that you can go for. The second AI tool that you can go for the data analysis is Drumshell. That is also very good. So that also gives with or that comes with the advanced data analytics. मतलब आप उसमें SEM भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. Just in case if you wish that no plagiarism should be there and you want that the data is very much clean and the analysis is very much clean, then you can ask the AI tool to write a Python code to perform all these things and then copy that Python code into Google Colab, re-execute that. आपको Python आना जरूरी ही नहीं है. अभी आप पाइथन अगर कन्वेंशनल वे से लर्न करना सीखोगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा और दिस इज द फुलिश वे टू लर्न द पाइथन. You just copy the Python code, you run it into the Google Colab. Google Colab is again an open source software and Google Colab come with the AI assisted co-pilot. So if you found any bug there, then you just need to type something like this that fix the bug for getting the output. So once you type that, it will ask you that the big bug is being fixed and you want to run it again and again. So अपने जैसे ही उसको रन कर दे, जो भी आउटपुट आपको चाहिए, be it SEM, be it smart PLS, be it any complex design, any complex mathematical modeling, आप जितना भी करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो. There are plenty of things that you can do with the Drumshell. आप Drumshell में भी कर सकते हो, Julius में भी कर सकते हो. This is for the complex kind of data analysis that you can have. So this is the prompt that you can write. मतलब ऐसे prompts है जो हम लोग लिख सकते हैं. अब ये prompt what I will do, I will upload it into the message box. आप खुद भी उसको read कर सकते हैं. Just give me some time.
I'm just uploading the message. Okay. ये डायरेक्ट कॉपी नहीं होता क्या, अटैच नहीं होता इसमें मैसेज बॉक्स में? There's no option of attachment here. Okay. You may send it to us, sir. There is a WhatsApp group of all the participants. We may send it. Sure. I'll mail it to you and then you can share it among them. Definitely, sir. So basically it's all about writing the prompt. मतलब बस इतना ही है जो आप को ध्यान में रखना है. Otherwise अभी 1 घंटा भी हम लोगों का खत्म होते आया है और हम लोग सिर्फ 1-2 ही prompt पे पहुंचे हैं. Otherwise the prompt is being written and this is the maximum prompt that you can issue. तो ये आप उसको यूज कर सकते हैं, आपके सर्वे में भी आप यूज कर सकते हो, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो. द ओनली रिक्वायरमेंट वुड बी दैट वी ओनली हैव a better idea that what our data is and how we are going to use those prompt for customizing our own output in the way that we want. So this is like a wise investigator can do. या फिर novice भी अगर होगे तो वो भी कर सकेंगे. The only thing is that you yourself ask any AI tool to generate a right prompt to get the things done. It will generate the prompt first and then you issue the same prompt to the AI tool for operating over the given data set and the things would done for you. तो ये मैंने जो डेटा सेट लिया था उसके लिए जो हाइपोथेसिस लिए थे वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है. If you wish to use the same data set, questionnaire, this prompt you can use, you can build your paper. No issues for that. ये सब कुछ मैंने भी खुद होके नहीं बनाया, मैं भी खुद लर्न कर रहा हूँ. मैं भी मतलब प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है उसी पे काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी यूजुअली मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही सिखाया जाता है बच्चों को. एआई प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं बस यही लर्न करना शायद ज़्यादा बेनिफिशियल है. हमारे यहाँ इंटरव्यूज में भी बच्चों को ये पूछा जाता है कि वेदर यू नो हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट टू गेट द थिंग्स डन. सो it is our only job that we should learn how to prompt the things together. If you are wise enough कि आपको ये आता है तो nothing like that. If not then we need to learn this and AI is going to help us in this. AI ही हम लोगों को help कर सकता है. ठीक है, let us see whether the Julius is still working or not. Okay, it is still thinking. Okay, now majority of things have done. चलो ठीक है, done. So look, this is the difference between the ChatGPT and Julius output. So what Julius is going to do, Julius is going to give you a Python script itself. आपके पास एक Python script भी आ जाएगा, आपके पास टोटल आउटपुट भी वहीं के वहीं आएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं के वहीं पता चल जाएगा. यहाँ पे हर आउटपुट के साथ टेक्स्ट एंड टेबल आपको यहीं पे मिल जाते हैं. देन डेटा इंस्पेक्शन उन्होंने कैसे किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, ये भी आपको मिल जाएगा. उसका डेटा टाइप क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा. सारा आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यहाँ पे मिल जाएगा. नॉट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ उसको रीड करने के लिए कहा है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट क्या था, तो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे और चार्ट जीपीटी का देखोगे तो इसमें एक डिफरेंस नजर आएगा. एक्चुअल में हमारे पास जो मैंने डेटा प्रिपेयर किया था उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी, बट स्टिल चार्ट जीपीटी हैड गिवन. The reason being because one row was empty and ChatGPT have considered it as an empty row and it has populated with the imputational values. So this is the difference between ChatGPT and Julius. So if you want to go with the data analysis, perhaps I would suggest that you should go with Julius or you should go with the drum shell. आप drum shell के साथ जाइए या फिर Julius के साथ जाइए. ठीक है. फिर आउटलियर डिटेक्शन में कहीं कोई आप लोगों को वैल्यू नहीं मिला है या कोई चीज हम लोगों को नहीं मिली है, आपको यहाँ पे उसका कंप्यूटेशन भी मिल जाएगा कि वेरिएबल कौन सा था, फिर आपके पास वैल्यूज कौन सी थी, वो सही है या गलत है, वो भी आपको मिल जाएगा. मीन्स इट वुड गिव यू अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करना चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा.
Why it is being operated for this 7 only? Because the 7 parameters were selected for the Likert scale data. That is why it is operating onto this 7 पैरामीटर्स ओनली. आपको आउटलियर डिटेक्ट करने थे तो आउटलियर डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि आप बॉक्स प्लॉट भी यूज कर सकते हैं. तो दे हैड गिवन यू द बॉक्स प्लॉट इटसेल्फ. सारे पैरामीटर्स के बारे में बॉक्स प्लॉट दिया हुआ है आपके पास. आउटपुट सेव, आपका आउटपुट भी सेव किया गया है. आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा. यहाँ पे आपको डाउनलोडेबल ऑप्शन भी मिल जाता है. आप इसको गूगल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगी. इसका और बेहतर हो सकता है या कर सकेंगे अगर आप इसको डेटा एनालिसिस करने के लिए बोलते हो. मतलब जो हम लोगों का सेकंड प्रॉम्प्ट है कि जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आपको डेटा एनालिसिस करना है, आपको इमेजेस बनानी है, आपको बॉक्स प्लॉट बनाना है, आपको कुछ और करना है, SEM करना है. तो आप जो भी प्रॉम्प्ट इसको इशू करना चाहते हो आप जूलियस में कीजिए एंड यू वुड सी दैट वंडर्स आर हैपनिंग एंड एवरीथिंग इज बीइंग डाउनलोडेबल. हर वो चीज आपको यहाँ पे डाउनलोडेबल मिल जाएगी. The only thing is that the analytical engine is being supported for very few iterations per day just because it is not a premium one, it is a free one. तो यही एक डिफरेंस होगा जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा with respect to ChatGPT and Julius. Drumshell is also better. Drumshell भी आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा. इवन GPy भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो GPy में भी ये सारी चीजें तो GPy में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करके मिल जाएगी. You can go with GPy also. ऐसे बहुत सारे AI टूल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो. The only thing is that how we are going to write the prompt. अगर मतलब रिपोर्ट भी अगर हम लोगों को लिखना है, हम लोगों का था कि ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन होना चाहिए. तो ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन में भी अगर हम लोगों का प्रॉम्प्ट चेक करेंगे तो प्रॉम्प्ट में आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली होता कैसा है या फिर कैसे होना चाहिए. Just a second, I'll show you the prompt which can be used for the report generation itself. Just a second. हम सब लोग लर्न ही कर रहे हैं. मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ. हर किसी को अपनी अपनी पेस से लर्न करना है. तो मुझे जैसा जितना समझ आया मैं आपके सामने रख रहा हूँ. This is not the one. So when you say that you want a report, automated report, अभी ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन ये जूलियस नहीं करेगा या फिर ये ड्रमशेल नहीं करेगा. और अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सो जेमिनाई इज वेरी गुड इनटू दिस. वन इज जेमिनाई, सेकंड इज क्लाउड इज आल्सो देयर. लेकिन क्लाउड में जो मतलब आउटपुट जनरेट होता है, यू नीड टू मीन्स पब्लिश इट फर्स्ट, गेट इट डाउनलोड. वो भी HTML फॉर्मेट में आएगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो थोड़ी तिकड़े में आपको परप्लेक्सिटी में ठीक सा मिल जाएगा या फिर आपको मीन्स ChatGPT या जेमिनाई में काफी अच्छे से मिल जाएगा. तो आपको रिक्वायर्ड रिपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे चाहिए, ये आपको जितना डिटेल में आपको बनाना है आप उतना बता के चलिए. अब जैसे हम लोगों के पास टाइटल पेज में क्या क्या चाहिए, लाइक रिसर्च टाइटल इज देयर, ऑथर डिटेल इज देयर, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, स्टडी कंटेक्स्ट, ये चाहिए. इफ यू आर आस्किंग देम टू राइट एब्स्ट्रैक्ट तो आप उसको बताइए, इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना चाहिए, लाइक 250 वर्ड्स का चाहिए. व्हाट इट शुड include, it should include purpose, methodology, sample, key finding, implications. Then at the same time, since abstract doesn't require citations, तो आप उसको वहीं पे बता दीजिए कि please avoid the citations. Then keyword कौन से चाहिए. तो if I am saying that these are the keywords that you should use, तो आप ये बता दीजिए. If you feel that you are not able to figure out who or what all are the keywords, you say that within the abstract you just list out the 5 best keywords that can be incorporated into this research paper. Then when we are talking about the introduction, then what all are the things that should get covered into the introduction. Then when we talk about the literature review, then what we should mention it. आप उसको कहाँ या कैसे मेंशन करना चाहते हो वो आप बताइए. लिटरेचर रिव्यू के लिए अगर आपको यूज करना है तो आई विल सजेस्ट कंसेंसस और लिट मैप. आप कंसेंसस या लिट मैप यूज कीजिए, वहां पे रियल टाइम रेफरेंसेस मिल जाएंगे. Often it may have seen that ChatGPT is not giving the right references or it generates the proxy references. So
रेफरेंसेस के लिए एटलीस्ट चार्ट जीपीटी का यूज ना करें, आप कंसेंसस यूज कीजिए, दैट इज बेस्ट टूल दैट यू कैन यूज फॉर. Then if we are talking about the research methodology as a part of component of your report, you can give all the details जैसे भी आपको देना है. Then what should be covered under descriptive analytics, what should be covered into inferential analysis, how visualization should be placed or what type of visualization you would be requiring, then what interpretation you would be looking for. On discussions should be focused on what that you should write, implications it is based on what or on what it should be focusing upon, limitations क्या होती है या कहाँ पे आपको focus करना है. Until and unless you give a clear instruction to AI, it is not going to work. इसलिए कहते हैं कि वो जितना इंटेलिजेंट है उतना डम भी हो सकता है अगर आपने उसको नहीं बताया कि एग्जैक्टली उसको करना क्या है. फिर आपका आउटपुट रिक्वायरमेंट, आप तो ये स्पेसिफिकली आपको बताना है कि व्हाट इज योर आउटपुट रिक्वायरमेंट. तो आप उसे बताइए कि दैट यू शुड जनरेट द फुल रिपोर्ट टेक्स्ट, it should contain the table and figure captions, and where we want to export it, we want to export it in terms of word or pdf. जो भी आपको लगाना है ये बताना है, ऐसा आप उसको बता सकते हैं. सो बिगर टॉपिक इज देयर, बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद 1 घंटे में कवर नहीं कर सकेंगे. Perhaps I might have not done justice with the topic itself, क्योंकि हैंड्स ऑन भी अगर देना है या बताना होगा तो नहीं बता पाएंगे 1 घंटे में, थोड़ा समय लगेगा. So still, if you have any question, please do ask. Now the platform is open to ask for any question. So I have a question. Yes. I want to understand that prompting will probably improve with practice. But apart from that, is there any other way one can understand the real technique of, getting the right prompts? Because when you are working with prompting, at times it gives you a result which is a little different from what exactly should be the outcome. So how one can come to it? Is there any technique apart from the No, means I won't say that there is any particular technique. I'll tell you that how I have learned that if I'm writing a research paper, then if I have already downloaded one research paper, I feel that this is the right format and I wish that my research paper should also be like this particular format, then I'll upload this research format and I ask them, I will issue a prompt to AI tool that I want to write my paper into the same format which is being attached over here. Kindly generate a prompt so that I would convert my research paper into the same format. So if you tell something like this, it will generate a prompt. So it is like trial and error basis only. Once you get a new prompt, you've refined the same thing again. You can say that no, here the emphasis is not given into implication. You please add the theoretical and the practical implication and accommodate it into the flow of the paper so that it will accommodate it into the flow of paper. So this is how what we have learned. Means it is not standard way. मैं ये बिल्कुल मतलब humbly confess कर देता हूँ, ये बोल देता हूँ कि ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है. मैं बस मुझे जैसे समझ आया मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Because we all are learning since it is a new technology, तो हम लोग उसको learn कर रहे हैं. एक बहुत अच्छा सा मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जब टीवी आया तो टीवी को पेनिट्रेट होने के लिए शायद 23 साल लगे इंडिया में, मतलब जब इन्वेंट हुआ और मतलब लोगों के घर में आया. इंटरनेट 1994 1995 में शुरू हुआ, 2010 तक के लोग अवेयर हुए. बट इफ वी सी द पेनिट्रेशन years of AI tools, it have been penetrated in only 2.5 years. सो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, पेनिट्रेशन उतना फास्ट होते जा रहा है. तो जैसा कोई बच्चा पढ़ रहा है हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं. मतलब इट इज लाइक एवरीवन इज सेलिंग इन द सेम बोट, एवरीवन इज इक्विप्ड विद सेम नंबर ऑफ वेपन्स एंड ऑफ इक्वल पोटेंशियल. दिस इज समथिंग हिसाब से करके देखा, मैं बस वो शेयर कर सकता हूँ. बाकी एक्सपर्ट वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें. एवरीवन इज लर्निंग. Thank you, sir. Thank you. Still, it was very helpful and insightful. Anybody else with the question? I think, sir, this session was really very engaging. Ma'am, I have a question. Okay, sorry, Yes, sorry. please. Sir, whatever we are doing with the report generation with the help of AI, so plagiarism में उसका कैसा रहेगा सर? प्लेगरिज्म में तो मैम प्लेगरिज्म तो आएगा नहीं. वो जो आएगा वो आएगा AI. Means it won't be treated as a plagiarism kind of thing. Since it is a large language model, it has developed its own content, its own output.
now the plagiarism tools are equipped with AI detection. तो वो Yes. मतलब जहाँ वो figure out होगा वो AI के लिए figure out होगा. जी. टर्निटिन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है. टर्निटिन में आप शायद एक आधा खुद का भी स्टेटमेंट लिखोगे तो वो शायद पकड़ लेगा कि ये एआई से जनरेटेड किया गया है, बिकॉज दे वर्क विद सम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, जिसकी वजह से वो पकड़ में आ सकता है. वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, लेकिन एआई जनरेटेड में तो पक्के से आ जाता है. तो उसके लिए सर फिर क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? आई मीन कुछ टूल्स है जो देते हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव है नहीं. मतलब एक जो यूज किया जाता है वो AI ह्यूमनाइज टेक्स्ट डॉट AI यूज किया जाता है. अगर आप उसको यूज करके देखेंगे तो शायद जो मैंने यूज करके देखा था, बट इट रिड्यूस टू ओनली 40 to 50%, नॉट मोर देन दैट. राइट सर. So it may be helpful more for the data analysis. डेटा एनालिसिस में तो कहीं कोई AI नहीं पकड़ में आएगा मैडम. आप जी. टेक्स्ट की बात करेंगे तो उसमें तो जरूर है. Yes, yes. I'm really sorry. Perhaps it was not up to mark. Even I'm not feeling it convinced कि यार मैंने कुछ ठीक किया है. No, not at all, sir. In fact, sorry to interrupt. It was really an engaging session, sir. We at least got more insightful about what is going and needed for us as a faculty too. And surely your depth of knowledge, practical examples, and clear delivery made today's training extremely valuable for all of us. And I'm sure all the participants do agree with me. And we also truly appreciate, sir, for the time, effort, and the expertise that you have shared with us. Now, I would also like to thank you and all the participants as well for this active involvement and enthusiastic throughout the session. Thank you Yes, once sir, again. and we are looking forward for tomorrow's session with you again. As well. Yes, ma'am. And Sure. we will wait for your mail. Yes, ma'am. I'll just share the same thing with you. Just give me 1 minute. I am sharing it with you. No problem, sir. Sir, you have given us homework also to work on the prompt and check all the AI tools which you have suggested today. So I hope all the participants will also do their homework and come tomorrow prepared with another session with Rahul, sir. Surely. And by that time, I just want to request everyone to kindly join us again tomorrow at the same time for the next insightful session and to continue this enriching journey of learning. Thank you so much. Thank you, everyone. Good night and see you again tomorrow. Ma'am, I have shared all the details with you. Means like PPT, the data file, and the prompt Word document. I have shared these 3 things with you. Okay, sir. So you can check your mail. Perhaps it is on the way and you will get it. Sure, sir. I will check and I'll share with all the participants as well. I just want to understand one thing, just because tomorrow also I'll be there. So shall we go with like a hands-on kind of thing, or just we go with I should prepare a PPT and should deliver? Because hands-on would require some time and perhaps 1 hour would not be sufficient. Sir, whatever you did today was actually very good. It was a mixture of both hands-on and the PPT. So मुझे लगता है कि जो आज किया सर आपने, so it was very good because we got to understand कि कैसे prompt लिखना है, use कैसे करना है, आपने tools भी share किया, तो बहुत अच्छा रहा. ठीक है, मैं कल भी छोटा सा ही एग्जांपल लूंगा so that it get covered into 1 hour, means best possibly. मतलब हम लोग उसको ऐसा भाषणबाजी ना करते हुए हम लोग फटाक से उसको स्टार्ट करके बिल्कुल yes sir. Thank you for giving me the opportunity. I also learned a lot. Thank you to you, sir. It is actually an opportunity for us to listen to you. Okay. Bye, sir. Thank you. Good night. Thank you very much.